nature, Oh, yes. look at birds, mountains. I have a question. Okay, ask the questions. I do skateboarding. Very good. I So appreciate there is, that. one thing you have to do in skateboarding is the most important is dropping. When I first started, I had fallen for many times. Mm-hmm. Okay, and I did it. Mm-hmm. But and after I did it, I was so happy. And the next time I tried it, I fall and I couldn't. I can't do that again. But after some time, I did it. But whenever I try to do it again, even though I have done it multiple times, there is still a fear in my heart how to remove that. Oh, it is a question from sports psychology. Wow, Yes. क्या My बात my है, legs shake. क्या बात है यार. Can you tell me how Very to nice. conquer or How I conquer the fear of what? Oh, yes, that's the question. I don't know. I have fallen many times, but whenever I try to do, my legs shake, and after shaking for hours, I stand like that, and I do it multiple times to remove that fear, but it doesn't go. Okay, not a big deal. We can work What on should that. I do? Yeah, we can work on that. So first of all, what you have to do, you like when you fall, when you fear of falling, that whenever you do skateboard, you should not fear, right? So first of all, if you are fear, it means you have something psychological drawback that I will fear at any time. But if you are having fear of fall, let's talk about fear of fall. Fear of fall, how you can protect it? Just to wear a very good protection. Wear a good protection on your body. That's it. Even if you fear the high end quality goods, you have to wear on your body. So, what psychological impact will go in your mind as a message that now my body is protected? Now my body Okay. is protected. Even if you will fall, your body will be protected because you have high quality of protection on your body. I know many skateboarders, they wear very good sport uniform while doing skating, right? So you have to wear that particular Yes. stuff on your knees, on your like sensitive parts, on your elbows, on your joints, right? You should not hurt yourself. Even if you hurt, so try to fall by yourself. For example, I have a fear of falling, right? What I Yes. am doing, first of all, first step to wear a very good quality of protection, and second is fear by yourself, fall by yourself. पहले गिर जाओ, गिरने से पहले गिर जाओ. फॉल बाय योर सेल्फ, जानबूझ के गिर जाओ, खत्म हो जाएगा फियर 100%. I don't have any, protection So right now. But buy when I that, buy that, buy that. पैसे खर्च करो. उससे पहले उसमें मैंने कुछ नहीं होता. नहीं, खर्च वो करो. तो हो जाएंगे. Listen to me. If you are into sports, try to spend on some good protection. स्केटबोर्ड में ही पैसे खत्म हो गए ना. क्या? स्केटबोर्ड ही बड़ा महंगा था. तभी तो यार इंडिया में अपने बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन इसीलिए तो पीछे रह जाते हैं. कोई पैसे की वजह से, कोई घर वालों की नामर्जी की वजह से, कोई अपनी ज़िद की वजह से, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, कोई इंजरी की वजह से. ठीक है, तो स्पोर्ट जहाँ पर तुम जो फॉलो कर रही हो वो एक बहुत बड़ी जर्नी है, अच्छी खासी जर्नी है. इस जर्नी में इंजरी भी होगी, ठीक है, कहीं पैसे कम भी पड़ेंगे, ठीक है, कभी तुम्हारा जो बोलते हैं ब्रेकअप पैचअप अगर हो रखा है तो मतलब इमोशनल ड्रॉबैक भी होगा. कभी कोई फैमिली मेम्बर की दवाइयाँ चल रही हैं तो उसमें दिमाग ख़राब होगा, राइट? इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है स्पोर्ट पर्सन का. इसीलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है आपको. जी हाँ.
जो नीरज चोपड़ा है वो पहले 80 मारता है, फिर 85 मारता है और फिर 88 मार देता है। ऐसे कैसे अगर उसके पीछे कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो? वही तो, इसीलिए यू मस्ट हैव अ गुड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट विद यू। इवन इफ यू डोंट हैव, just follow some guidance whatever I'm trying to tell you. So wear full protection, okay? First. Second Okay. is fall, wear full protection. Second is try to fall by yourself, try to fall. Third, this will mitigate the effect of fear, you know, this will reduce the effect of fear, okay? Okay. Yeah. Thank you. Third is whatever the fear you have inside you, try to like before doing skateboard, whatever the fear you have, try to assume that fear is nothing. This fear is nothing in front of my positive energy, now in front of my positive energy। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी भगवान को तुम मानती हो वो पॉजिटिव एनर्जी होता है एक तरीके से। तो आपको स्केट बोर्ड, आपने देखा होगा कई लोग स्टेज पे चढ़ने से पहले उसके पैर छूते हैं, राइट? स्टेज पे स्पीच देने से पहले स्टेज के पैर छूते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनको क्या देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी। कई लोग गाड़ी चलाने से पहले प्रार्थना करते हैं, वो उनको क्या देता है, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप मानो कि नहीं, यू मस्ट हैव दैट पॉइंट, गेट द पॉजिटिव एनर्जी इन यू बिफोर डूइंग स्केटबोर्ड, हैव दैट पॉजिटिव एनर्जी विद यू, ये फियर को कम करेगा, ठीक है? Okay. अगर ये नहीं हुआ Thank you तो very तुम much. कितना भी स्किल ले लो, घंटा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए ना आपके अंदर एक। हाँ जी। Thank you. I will try that out. Yeah, 100% you should try, it's very good. Thank you very much. Thank you, have a good day, bye bye. Have a good day too. Bye bye.